Hello everyone, I hope you all are doing great and I hope your studies are going great. तो आपकी studies as you all know from our YouTube channel that DCC की test series is currently going on. और वो टेस्ट सीरीज में अभी तक काफ़ी सारे टेस्ट हो चुके हैं और वो बहुत सारे टेस्ट को चेक करके उन सबको एनालाइज करके अभी रिसेंटली मुझे एक चीज़ समझ में आई है दैट मेनी स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट द आंसर इन योर एग्जाम इन योर पेपर, हाउ टू राइट द आंसर, हमें कैसे अपना आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए, व्हाट आर द वेज टू डू दैट. एंड इफ द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द टेस्ट सीरीज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, then I might think that other students, other CMA students are also facing the same problem. So to help you overcome this problem, I am here with this video on how to write your paper. See, because what happens is if you have 100% knowledge but you do not know how to deliver that knowledge, that is a very big drawback. And that knowledge is no use to you if you do not know that how can you pass that knowledge to the other person. Suppose you are well versed with all the provisions of the subjects, with all the provisions of say for example direct tax. You are very well versed with all the provisions but you do not know that how to present that provision or how to write that answer in the paper. Then there is no use of knowing that provision or knowing that concept. बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट नो कि हमें कैसे बताना है एग्जामिनर को, हमें अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, कोई यूज नहीं रह जाता है वो कॉन्सेप्ट को याद रखने का. ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका पेपर का प्रेजेंटेशन, दैट मैटर्स अ लॉट. ओके सो सबसे पहला काम आपको देखो, सबसे पहले प्रेजेंटेशन जो है वो आपका केवल लिखने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. प्रेजेंटेशन आपका किस पे डिपेंड करेगा, आपको पेपर 15 मिनट्स पहले मिल जाता है. आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो 15 मिनट्स को 100% यूटिलाइज करना एंड आइडेंटिफाई करना कि कौन से 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं. सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं आते, ये 2 क्वेश्चन तो मुझे छोड़ने ही छोड़ने हैं. सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, सपोज क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th आर हैविंग 2 ऑप्शंस A एंड B, and this one is also having A and B and C also for example. and question number 4th के आपको A and B दोनों ही नहीं आते हैं और 5th के अंदर आपको केवल C वाला नहीं आता है. तो I guess what is the most appropriate choice at that moment will be कि आप 4th वाला क्वेश्चन स्किप कर दो और 5th वाले को लास्ट के लिए रख लो, like the lender of last resort. 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं इसको लास्ट में करूंगा, या इसके मुझे 2 पॉइंट्स आते हैं तो 2 पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है, 1 पॉइंट मुझे नहीं आता तो इस क्वेश्चन को मुझे लास्ट में करना चाहिए. ओके 15 मिनट्स यूटिलाइज करनी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से 2 क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, सो दैट आपके पेपर में कोई काटम पीटी नहीं हो, आपका प्रेजेंटेशन एकदम अप टू मार्क हो. Okay, your presentation should be very good in order to make your the person who is checking your copy, in order to make that person understand that what you have written and you are very well with your knowledge, you know what you are writing. Okay, you are not confused in writing your answers. All right, so the first one is utilize 15 minutes time. Now the second one is write new answers from a fresh page. What the maximum number of students do is, suppose they have written an answer and that answer had utilized this much of paper, this much of your answer sheet, so they start the new answer with the remaining part only. Do not do that. Answer your new option or your new question with a fresh page only. Okay, and in this I would like to add one point also, that mention the option number very correctly. Second point is write new answer from fresh page. It doesn't matter how much page is left, even if the half of the page is left, do not write your new answer with that page. Okay, not even the next option of the same question. And with this, it is third point, mention the options correctly. What students do is, suppose there is question number 2
and this question number 2 is having 3 options A, B and C. What student do is they just write question number 2. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है. You want the person who is checking your copy, you want the examiner to evaluate this in your answer sheet? They will not. Okay, they will not devote this much of time to one answer sheet to identify that okay, which question is this that student have attempted, if you will not write the proper option number. So write the option number, and what maximum students do is they write the answer on the very left corner of the answer sheet. Do not do this. Write it in the middle of your answer sheet. Whatever your question number is, write in the center of your answer sheet so that there is no chance of that option to be left out in the corner. Examiner will notice it. If something is written in the center, you will notice it at first. Okay, so next thing is write your answer number in the middle of your paper. Then most important thing, read your questions twice. Because what happens is, suppose a person is knowing the concept but he do not know what question is trying to ask. For example, a question have asked what are the advantages of registration under GST. Okay, so you know about registration. A person have just read that okay, registration का question है, registration के provisions लिखना start कर दिया आपने. क्वेश्चन को पढ़ो तो सही, वो रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस नहीं पूछ रहा है, वो रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस पूछ रहा है, रजिस्ट्रेशन का मीनिंग नहीं पूछ रहा है वो. What maximum number of students do is they just write the meaning of registration, that registration ये होता है, इतने टाइम में करवा लेना चाहिए, ये होता है, वो होता है, वो होता है. अरे आप एडवांटेजेस लिखो. आपको अगर वो क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का है तो डेफिनेशन का 1 मार्क रहेगा, आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का 1 मार्क रहेगा, बाकी के मार्क्स आपके एडवांटेज के रहेंगे. तो राइट द एडवांटेजेस. और वो एडवांटेजेस कब लिखोगे? जब आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे. दिस हैपेंस इन बोथ थ्योरी पेपर एंड प्रैक्टिकल पेपर. रीड योर क्वेश्चन थरली, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को अच्छे से समझो. क्वेश्चन ही गलत पढ़ेंगे तो आंसर तो डेफिनेटली गलत होएगा. ओके, थ्योरी के लिए नीटली प्रेजेंट करना है आपको. नाउ नीटली प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? गिव प्रॉपर स्पेसिंग. Okay, what students do is they do not give space. आप पैराग्राफ में ही सारी चीजें मेंशन कर देते हो, so एग्जामिनर को पढ़ने में he or she faces a lot of difficulties in reading your answer if it is in the paragraph form. Whereas if the same answer would be in bullet points or in the points format and with the proper spacing, right? If you have left a 1-line space after every point, it will be very much easy for the examiner to check that question, and along with this underline the special points, underline the special keywords, underline the keywords in your point. Okay, that would be very much helpful. The examiner would just focus on that keyword and he will take your answer. ऑन दी अदर हैंड पैराग्राफ पढ़ना होगा तो बहुत इरिटेट हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि आपको उसके नंबर उतने ना मिले. ओके, देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज दैट यू डू नॉट गेट द ऑप्टिमम मार्क्स फॉर दैट आंसर. नेक्स्ट, मेक द वर्किंग नोट्स. In your paper, like your direct tax and indirect tax, working notes play a very important role. So do not forget to make a working note, and do not forget to give the reference of that working note in your main answer. Give the reference of that working note in your main answer. Okay? Attempt 100% of your paper. कुछ नहीं छोड़ना है. नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई सीन है नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है. एमसीक्यूज नहीं आते हैं, लास्ट में रखो. ऑर्डर वाइज एमसीक्यूज को लिखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल योर 15. नहीं आते हैं अभी के लिए छोड़ दो, बाद में जाकर के उसको लिखना. ऑप्शन लिखना, कुछ भी ऑप्शन लिखना जो आपको करेक्ट लग रहा है. whatever option according to you is the most appropriate, write that option, but do attempt 100% of your paper. पेपर को बीच में छोड़ करके नहीं जाना है कि अब मेरा मन नहीं कर रहा है, आधा घंटा बचा हुआ है, या whatever the cases, I have attempted 80% of the paper, इसमें से मैंने 80% पेपर कर लिया, मेरे 60% तो आ ही जाएंगे. नो, 100% पेपर करो.
ठीक है. Next and the most important thing is do not use short forms. What people do is interest लिखना है INT. अरे what is INT? क्या होता है INT? कुछ नहीं होता INT जैसा. ठीक है, इंटरेस्ट पूरा लिखो. ओके. अमाउंट लिखना है, AM लिख देते हैं कि AMT लिख देते हैं, नहीं, पूरा लिखो आप अमाउंट, AMOUNT. ओके. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी को HP लिख करके छोड़ देंगे, नहीं लिखना है, पूरा लिखो हाउस प्रॉपर्टी. ऑल राइट, डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, आई होप ऑल दीज पॉइंट्स विल बी यूजफुल टू यू, बिकॉज सी प्रेजेंटेशन जो है ना, आपकी कॉपी जो इंसान चेक कर रहा है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो केवल आप ही की कॉपी लेकर के बैठ जाएगा. तो अगर आप उसे कंप्लीटली एक अच्छी नीट कॉपी दे रहे हो, मतलब आप उसको बोल रहे हो दैट ओके check my copy and this copy will take least of your time because I have presented my every answer in a very correct manner. That person is very happy while checking your copy. And if a person is happy, this is human psychology. If a person is happy, he or she will try to give you maximum marks that you can get for that answer. You will get the optimum marks for your answer. And suppose if a person is very irritated in the beginning only of your answer, then there are high chances of you not getting the optimum marks. Okay, I hope these points will be helpful to you, and I hope you will inculcate all these points in your answer writing pattern. Thank you so very much. All the very best for your preparations, and you can ask any of your query in the comment section. Thank you.